Just we discuss related to the graphical method. Let's we'll see analytical method. Analytical method. In this analytical method, we are going to discuss about how to we are adding the vectors and how to we are subtracting the vectors. Let's see. First, we will take the addition of vectors by parallelogram law of vectors. And here two laws is there: triangle of vectors and parallelogram law of vectors. Both are similar conditions. So I'll explain the parallelogram law of vectors. Parallelogram law of vectors. Parallelogram law of vectors. Here, if you observe the statement of parallelogram law of vectors, which states that two non-zero vectors are the two sides of the parallelogram. Two sides of the parallelogram, and the resultant vector is the diagonal of the parallelogram. Resultant vector should be the diagonal of the parallelogram vector. Means here we are considering two non-zero vectors. Those two are the sides of the parallelogram, and angle between the two non-zero vectors is theta. Two non-zero vectors. I am considering here two non-zero vectors. A is one non-zero vector, B is another non-zero vector. A is a one vector and B is another vector. So what is the angle between A and B? The angle between A and B is theta. Now what is the diagonal? The diagonal is the resultant of these two vectors. How we are getting the diagonal? So what I am doing, I am considering two parallel vectors. One is the parallel vector of A or equal vector of A, you can consider. This is A, I am considering here. And this is B. So see here, B, here B. Here A, and here A. Here B, and as well as here B. Wait a minute. What we will do? Okay, right. Now what we are doing here, I am just extending the A. When I am just extending the A, here what is the angle? Theta. Then here also the angle should be theta. Yes or no? Yes. Here angle theta, and here also angle is theta. And now you can see here. Now this B, this is a B here. This is a B now. B is making an angle theta with the X, and this you can write it like Y. First of all, you can give some numbering. This is O I am considering. This is a P I am considering. This is a Q, and this is N, and this is R. So like we're considering O, P, Q, N, R like that, considering we are. Now here, see here, the B can be resolved into two components by the resolution of vectors. See here, what is the value of PQ? PQ is equal to what we can able to write? PQ is equal to opposite side. How much? Sorry. First you can write cos theta. Cos theta is equal to what we can able to write? Adjacent PQ upon hypotenuse Pn. Then PQ is equal to what we can able to write? Simply PQ is equal to Pn, nothing but B cos theta. PQ is equal to simply B cos theta. And take sine functions. Sine function is nothing but how much you can get? NQ. NQ upon Pn. Now we try to get the value of NQ. NQ is equal to how much you can get? NQ is nothing but you will get Pn into sin theta, nothing but B sin theta. NQ is equal to B sin theta. Now this is the actually resultant vector. From the statement, this is the resultant. What is the statement? Two non-zero vectors are the two sides of the parallelogram. Then its diagonal is the resultant of both vectors. This diagonal is the resultant of both vectors. This is I am considering resultant vector R. This resultant is making some angle alpha with the A axis. Alpha with the A vector. Now PQ is equal to B cos theta and NQ is equal to B sin theta.
Now we need to get the resultant of this. Then resultant R is equal to what we can able to write. R bar is equal to what is that? R is here completely. You can observe here there is a right angle triangle. What right angle triangle? From the right angle triangle, from OQN, from right angle triangle OQN. What we can? This is from which triangle we are considering? This is from PQN. This is from triangle PQN, and that is triangle from OQN, right angle triangle. There I want to get the value of R. That's why I am taking R square, hypotenuse square. Hypotenuse square is equal to adjacent square plus opposite square. What is adjacent square? The adjacent square is OQ square. OQ square plus QN square. OQ square plus QN square. So then the hypotenuse R is equal to R square equal to OQ square. OQ is nothing but what we can able to write? OP plus OQ is equal to what we can able to write? We can able to write OP plus PQ. OP plus PQ. OQ equal to OP plus PQ. Just to put the value of that. OP plus PQ whole square plus Q1 square. Once see here, according to the diagram, PQ is equal to B cos theta and OP is equal to how much? OP is equal to simply A. Just to put that, that is R square equal to OP is nothing but A plus PQ is nothing but B cos theta. A plus B cos theta whole square. A plus B cos theta whole square plus QN or NQ how much? B sin theta whole square. B sin theta whole square. A plus B cos theta whole square plus B sin theta whole square. Let's expand it. Then R square is equal to A plus B whole square. A square plus B square. B square cos square theta plus 2AB cos theta. 2AB cos theta plus B sin theta, nothing but B square sin square theta whole square. So now for our convenience we are writing here R square equal to A square plus here B square cos square theta, here B square sin square theta. Just take common B. If you are taking B square as common, then cos square theta plus sin square theta plus 2AB cos theta. Cos square theta plus sin square theta plus 2AB cos theta. We know that cos square theta plus sin square theta is equal to 1. Then R square is equal to how much you got? A square plus B square plus 2AB cos theta. A square plus B square plus 2AB cos theta. Then R is equal to under root A square plus B square plus 2AB cos theta. This is the resultant of magnitude. Resultant of magnitude. So the resultant, magnitude of resultant vector. Magnitude of resultant vector how much? A square plus B square plus 2AB cos theta. So here, if the two vectors, different directions, that we will see here. Now, this is the magnitude. Then what about the direction of resultant vector? Direction of the resultant vector. Direction of resultant vector. And the resultant vector is making an angle alpha with the A vector, na? Again you can choose from the triangle only. From which triangle? OQN. From the triangle OQN. We can take simply tan alpha. Tan alpha is equal to opposite side NQ upon adjacent side OQ. Opposite side NQ is nothing but B sin theta upon adjacent side how much? OP plus PQ. So the value is simply B sin theta upon A plus B cos theta. B sin theta upon A plus B cos theta. This is the tan alpha, means the direction of the resultant vector. The magnitude of the resultant vector is under root
a square plus b square plus 2ab cos theta, and the direction of the resultant vector is b sin theta by a plus b cos theta. So this is the magnitude and that is the direction. We'll see some special cases. For example, here a and b are the two vectors. What is the resultant? We got magnitude of resultant vector under root a square plus b square plus 2ab cos theta. A square plus b square plus 2ab cos theta. For example, here what we are considering, if the angle between a and b is, if the angle between a and b is 0 degrees, angle between a and b is 0 degrees, then what about the resultant of magnitude and the direction? Resultant, so r is equal to, how much you are getting? A square plus b square plus 2ab cos 0. Cos 0 how much? 1. So that means nothing but a is equal to under root a plus b whole square. Square root will be cancelled. Then resultant magnitude, how much you are getting? Magnitude of a plus b. A plus b when angle between them is 0. If the angle between them is 180, then 180 means here 0 means both are in the same direction here. A and b both are in the same direction. So at that time, what is the magnitude of the vector? The magnitude of the vector means simply you have to consider the sum of the two vectors. The sum of the two vectors means any condition if two vectors are in the same direction, then what is the resultant magnitude you need to consider? The resultant magnitude is nothing but sum of the two vectors. Two vectors को आप add करना है, sum करना है. कब? Angle between the vectors is 0. In case angle between the vectors is 180, अभी 180 लीजिए. 180 बोले तो दोनों वेक्टर्स कैसा रहेगा? दोनों वेक्टर्स अपोजिट रहेगा. सो इस कंडीशन में 0 बोले तो एंगल बिटवीन ए एंड बी ये है और ये बी आपने मेंशन किया तो इधर एंगल कितना होगा? दोनों एक ही तरफ है. एक ही तरफ बोले तो एंगल बिटवीन देम 0. दो पैरेलल वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना होगा? 0. एंटी पैरेलल वेक्टर एंगल कितना होगा? दोनों को बीच में 180. एक पैरेलल और एक एंटी पैरेलल मींस नथिंग बट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एंगल 90. मतलब कौन सा भी एंगल हो आप ले सकते हैं. और एक काम करो, इधर 180 लीजिए. theta is equal to 180. If theta is equal to 180, then resultant is equal to under root. मैं डायरेक्ट ले रहा हूं अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा. क्यों माइनस? cos 180 कितना है? cos 180 minus 1. What is the value of cos 180? minus 1. अब यहाँ पे लगाओ कितना होगा? r is equal to under root a square plus b square minus 2ab. Nothing but a minus b whole square. a minus b whole square और root square cancel होगा. Then a minus b. What is the magnitude? The magnitude of the resultant vector कितना होगा? a minus b. So इस कंडीशन में हम क्या बता सकते हैं? Either vectors are anti-parallel. Anti-parallel means opposite to each other. जब vectors anti-parallel होगा, the resultant vector a minus b. Resultant vector is a minus b. Next 0 180. अभी तीसरे केस लीजिए. कितना? थीटा इज इक्वल टू 90 लीजिए. 90 बोले तो कैसा होगा? ये ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा. इधर डायरेक्शन क्या होगा? एक बार डायरेक्शन के बारे में देखो. डायरेक्शन क्या हो जाएगा? tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा. साइन 0 पूरा 0 हो जाएगा. cos 180 साइन 180 0. सो कुछ भी एंगल नहीं होते. डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन होगा. दोनों भी सेम डायरेक्शन मींस बोथ आर हैविंग द सेम डायरेक्शन. अभी देखो एंगल बिटवीन देम इज 190. सॉरी एंगल बिटवीन देम इज 90. ए एंड बी के बीच में एंगल कितना है अभी? 90 डिग्रीज. अब इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab cos 90. cos 90 कितना है एंगल? cos 90 0. cos 90 कितना होगा? 0. जब cos 90 0 होते हैं और पूरा इक्वेशन क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर अंडर रूट
a square plus b square. Then what about the direction? Direction बताओ. Direction tan alpha is equal to क्या है फॉर्मूला? b sin theta, b sin 90 upon a plus b cos theta, cos 90. डायरेक्शन का फॉर्मूला क्या है? b sin theta upon a plus b cos theta. अभी देखो tan alpha is equal to b sin theta sin 91 upon a plus b cos theta cos 90 0. So then what is the direction of the resultant vector? Tan alpha is equal to b upon a. मतलब अल्फा बोले तो ये एंगल किधर से ले रहे हम. So alpha which is the what is the value of alpha? b by a. अभी दूसरे लो, एंगल इज 120, एंगल इज 60. कौन सा भी आपको ये सॉल्व कर सकते हैं. और दूसरे कंडीशंस जाएंगे हम. फॉर एग्जाम्पल इस कंडीशंस में स्पेशल केसेस 1 2 3 हो गया और दूसरे केसेस लेके गए इधर. फॉर एग्जाम्पल अभी दोनों का मैग्नीट्यूड एक ही है, मैग्नीट्यूड इज सेम. इफ a is equal to b, then what is the value of that? If a is equal to b, a is equal to b हुआ तो क्या हो जाएगा? देखो r bar is equal to अंडर रूट a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर, b जगह में ये लीजिए प्लस 2ab अगेन a स्क्वेयर cos थीटा. मतलब b जगह में ये लिखना है. सो देन a स्क्वेयर प्लस 2a स्क्वेयर cos थीटा. अभी आप ऐड करो 2a स्क्वेयर प्लस 2a स्क्वेयर cos थीटा होगा और उसमें 2a स्क्वेयर कॉमन लीजिए तो कितना 1 प्लस cos थीटा. 2a स्क्वेयर बाहर निकालो रूट से a हो जाएगा. आफ्टर दैट कितना है 2 ऑफ 1 प्लस cos थीटा. 1 प्लस cos थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 प्लस cos थीटा. एक बार ये फॉर्मूला याद करो. cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1. cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1. cos थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1. अभी हमारे पास कितना है 1 प्लस cos थीटा है. 1 प्लस cos थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं अपने 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2. 1 प्लस cos थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2. ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो. यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपको क्या मिलेगा? फाइनल आंसर बताओ क्या मिलेगा आपको? r is equal to a into under root 2 into 1 plus cos theta. 1 plus cos theta means 2 cos square theta by 2. मतलब r is equal to 2 2s are 4 मतलब रूट 4 बाहर आए तो 2 हो जाएगा. 2a cos theta by 2. 2a cos theta by 2. What is the resultant vector? Resultant of the magnitude of resultant vector is 2a cos theta by 2. मतलब वो दोनों एंगल का बीच में कितना रहता है उतना आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा. और एक बार चेक करो इसको और एक बार देख लीजिए इसको. इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, एंगल बिटवीन देम 0, देन रिजल्टेंट वेक्टर a प्लस b होगा. और इधर एंगल इज 180, cos 180 कितना होगा -1. मतलब दोनों वेक्टर्स अपोजिट टू ईच अदर. सो अभी इसका इक्वेशन लीजिए कितना होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab मींस a माइनस b होल स्क्वायर. स्क्वायर और रूट कैंसिल होगा a माइनस b. मतलब दो वेक्टर्स अपोजिट हुआ तो ये आ जाएगा आपको और ये परपेंडिकुलर टू ईच अदर. a square plus b square. Direction tan alpha is equal to b sin theta by a plus b cos theta. और if a is equal to b है तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा 2a cos theta by 2. और इसका कंटिन्यूएशन लेंगे एक बार देख लीजिए. if the angle is different then what about the condition? See here, if a is equal to b, इसमें केसेस लेंगे. इसमें फर्स्ट केस if a is equal to b and angle between them is 0, then what is the resultant? a is equal to b, resultant कितना है 2a cos. एक काम करो पहले डायरेक्शन निकालो, डायरेक्शन के बाद हम देखेंगे डायरेक्शन क्या है. डायरेक्शन का फॉर्मूला क्या मिलते हैं हमको tan alpha is equal to, if a is equal to b then what about the direction? That's I am solving. If a is equal to b, magnitude is 2a cos theta, then what about the direction?
If A is equal to B, then magnitude of resultant vector कितना है, इतना आया था. If A is equal to B, then the direction of the resultant vector, direction tan alpha को क्या बोलते हैं हम, direction, direction of resultant vector, direction of resultant vector. So direction of resultant vector जनरली हम क्या लेते हैं, tan alpha. tan किधर से आया था, ये डायग्राम आप कभी भी छोड़ नहीं करना है, डायग्राम तो आपको रहना ही है. Means you need to maintain the diagram. This is parallelogram. एक मिनट, ये क्या है, अल्फा. अरे दिस इज एंगल बिटवीन देम थीटा, और ये अल्फा. हाँ वो लीजिए, हम वो लेना है. हम tan अल्फा इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा. अब इधर इक्वेशन क्या है, a is equal to b, a is equal to b, then tan alpha equal to a sin थीटा अपॉन इधर a कॉमन लीजिए, दोनों b पे का प्लेस में भी a लगाओ, कॉमन लीजिए, 1 प्लस cos थीटा. 1 प्लस cos थीटा का फॉर्मूला कितना है, 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2. और sin थीटा, sin 2 थीटा का फॉर्मूला पता है क्या, यस, sin 2 थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा. sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है, 2 sin थीटा cos थीटा. sin 2 थीटा फॉर्मूला 2 sin थीटा cos थीटा. sin थीटा का फॉर्मूला 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2. जब आपको इधर ये कैंसिल होगा और tan अल्फा इक्वल टू sin 2 sin थीटा का क्या ले सकते हैं फॉर्मूला, 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2 अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2. cos फंक्शन टू फंक्शन कैंसिल हो जाएगा, cos फंक्शन एंड टू फंक्शन कैंसिल हो जाएगा. आपको फाइनल कितना मिलेगा, tan अल्फा इक्वल टू सिंपली sin अपॉन cos, tan थीटा बाय 2. tan अल्फा इक्वल टू tan थीटा बाय 2. देन अल्फा इज इक्वल टू कितना है, इधर अल्फा इज इक्वल टू कितना आया था, थीटा बाय 2. जब उसका मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाएगा, देन द डायरेक्शन ऑफ द एंगल इज हाफ ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड, हाफ ऑफ इट्स गिवन वैल्यू थीटा बाय 2. अभी डिफरेंट केसेस में देखेंगे इसको. इफ a is equal to b, if a is equal to b, the magnitude of the resultant vector, how much you got, 2a cos theta by 2 आया था. magnitude of resultant vector 2a cos theta by 2, and the direction tan alpha is equal to tan theta by 2, is nothing but alpha is equal to theta by 2. Now we'll see different cases. Different cases हम देखेंगे, एक बार देख लीजिए. If theta is equal to 60 degrees, then what about the magnitude of the resultant vector? Theta is equal to 60. Magnitude of the resultant vector r is equal to 2a cos 60 by 2. Now 30 cos 30 how much, cos 30 root 3 by 2, to cancel. Then what is the resultant value is simply root 3a. And what is the direction, direction is 30 degrees, because theta by 2 na direction of the resultant vector by 2, theta by 2, theta is 60 by 2, that is equal to 30. Take 90 बोले तो परपेंडिकुलरली, ऑलरेडी हमने देखा है परपेंडिकुलरली. इफ थीटा इज इक्वल टू 90, a is equal to b and theta is equal to 90, then what about the resultant? Resultant is equal to 2a cos 90 by 2. Cos 90 by 2 how much, 45. 2a cos 45 1 by root 2. Then resultant कितना आएगा आपको, root 2 into a. Resultant is root 2 into a. And alpha value 90 by 2.
nothing but 45. 90 by 2, nothing but 45. And one more you can take. One more you can take. What is that? If A is equal to B and angle is 0, then directly 2A you can take. A is equal to B, angle is theta is equal to 120 you can take. 120 लिया तो 2A or cos 120 by 2. Cos 120 by 2 means cos 60. So that is 2 cos 1 by 2. Then resultant is how much? Simply A मिलेगा. And what about the direction? Direction is 60 degrees. ये applications हमको applications मतलब जब angle और दोनों बदल करेगा हम ये ले सकते हैं.